वन लाइनर्स। 1. अनुच्छेद 258 किससे संबंधित है? What is Article 258A related to? Answer. Grant states power to assign union functions to their officers only with central government consent. 2. भारतीय संविधान में संघीय या फेडरेशन शब्द का उल्लेख है या नहीं? Is the term federal or federation mentioned in the Indian Constitution? Answer. No, India's constitution never explicitly uses the terms federal or federation in its text. 3. भारतीय संघवाद किस देश के मॉडल से प्रेरित है? Which country's model inspired Indian federalism? Answer. Canada's model biased to at the center. 4. सरकारिया आयोग कब गठित हुआ और इसने क्या सिफारिश की? When was the Sarkariya Commission formed and what did it recommend? Answer. 1983-1988, recommended establishing the Interstate Council under Article 263. 5. अंतर-राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? When was the Interstate Council formed and who chairs it? Answer. Formed in May 1990, chaired by the Prime Minister with Chief Ministers and Lieutenant Governors as members. 6. 104 संविधान संशोधन ने क्या समाप्त किया? What did the 104th Constitutional Amendment abolish? Answer. Anglo-Indian community reservations, 2 seats in Lok Sabha and 1 seat in state legislative assemblies implemented post-2020. 7. गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनवा मिल्स और इंदिरा साहनी मामले किससे संबंधित हैं? What are the Golaknath, Kesavananda Bharti, Minerva Mills, and Indira Sawhney cases related to? Answer. Golaknath Parliament cannot eliminate fundamental rights. Kesavananda Bharti, Basic Structure Doctrine. Minerva Mills, Reinforced Basic Structure. Indira Sawhney, 27% OBC reservations in central government jobs. 8. अनुच्छेद 131A को किस संशोधन ने जोड़ा और किसने हटाया? Which amendment added Article 131A and which removed it? Answer. Added by 42nd Amendment gave Supreme Court exclusive power over central laws. Validity removed by 43rd Amendment. 9. Champakam Dorarajan केस ने क्या स्थापित किया? What did the Champakam Dorarajan case establish? Answer. Fundamental rights take precedence over directive principles of state policy (DPSP) when there is a conflict between them. 10. प्रत्यायोजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है और क्या इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? What is delegated legislation and can it be challenged in courts? Answer. Rules and regulations made by administrative authorities, tribunals, courts, local governments outside parliament, state legislatures. Yes, it can be challenged in courts. 11. समान नागरिक संहिता यूसीसी किस अनुच्छेद में है और स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? In which article is the Uniform Civil Code (UCC) and which was the first post-independent state to implement it? Answer. Article 44 under DPSP. Uttarakhand was first, followed by Gujarat. Assam has passed the bill but not fully implemented. 12. गोवा में यूसीसी की क्या स्थिति है? What is the status of UCC in Goa? Answer. Goa historically had UCC before independence. It applies to all communities regardless of religion based on British common law. 13. अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है और वर्तमान में कौन-कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? What is Article 312 related to and what are the current All India services? Answer. Grants Rajya Sabha authority to create All India services, currently IAS, IPS, and Indian Forest Service. 14. सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार किन अनुच्छेदों के तहत हैं? Under which articles are the original and appellate jurisdictions of the Supreme Court? Answer. Original jurisdiction Article 131, appellate jurisdiction Articles 132-136. 15. अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? What is Article 141 related to? Answer. Law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India. 16. अनुच्छेद 142 और 143 किससे संबंधित हैं? What are Articles 142 and 143 related to?
Answer. Article 142 Supreme Court power to pass decrees for complete justice. Article 143 Advisory jurisdiction of the Supreme Court. 17. भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की स्थापना कब और किसने की और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? When and by whom was the Indian Olympic Association (IOA) established and who is its current chairman? Answer. Established 1927 by Dorab Tata and Aga Khan. Headquarters New Delhi. Currently chaired by P.T. Usha. 18. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है और संसदीय अनुमोदन कितने समय में लेना होता है? What is the maximum duration of President's rule under Article 356 and within what time must parliamentary approval be taken? Answer. Maximum 3 years. Parliamentary approval required within 2 months. Re-approval required every 6 months. 19. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन कितने समय में लेना होता है? Within what time must parliamentary approval be taken for national emergency proclamation under Article 352? Answer. Within 1 month. Unlimited extension possible but re-approval required every 6 months. 20. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं और वित्त आयोग की सिफारिशें किस अनुच्छेद के तहत हैं? Who chairs the 16th Finance Commission and under which article are Finance Commission recommendations defined? Answer. Arvind Panagaria. Article 280 recommendations are advisory, not legally binding. 21. डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 किसके शासनकाल में पारित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? During whose rule was the Defense of India Act 1915 passed and what was its purpose? Answer. Passed during Viceroy Hardinge's time during World War I 1914-1918, empowered British executives to conduct preventive detention without specific cause, specifically targeting groups like the Ghadar Party. 22. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नई सीआरपीसी की प्रमुख धाराएं कौन-कौन सी हैं? What are the key sections of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यू सीआरपीसी? Answer. Section 105 Video recording of searches seizures. Section 173A for. Section 183 0 for. Section 258 Judgments within 30 to 45 days. Section 530 Virtual court proceedings allowed. 23. CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का है और सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? What is the tenure of the CAG and what is the retirement age? Answer. 6 years or retirement at age 65 whichever is earlier. 24. अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? What is Article 60 related to? Answer. Oath and affirmation of the President of India, administered by the Chief Justice of India. 25. भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के मामले में मूल क्षेत्राधिकार किसके पास है? Who has original jurisdiction in disputes between center and states in the Indian Constitution? Answer. Supreme Court under Article 131. 26. IOA किन खेलों के लिए एथलीटों का चयन और प्रबंधन करता है? For which games does IOA select and manage athletes? Answer. Olympic Games, Asian Games and International Multi-Sport Competitions. 27. भारत में अंतर राज्य परिषद किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई? Under which article was the Interstate Council formed in India? Answer. Article 263. 28. मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित था? What was the Minerva Mills case related to? Answer. Reinforced the basic structure doctrine established in the Kesavananda Bharti case. 29. केंद्रीय सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत क्या है और यह किस मामले से स्थापित हुआ? What is the percentage of OBC reservation in central government jobs and which case established it? Answer. 27% OBC reservations established by Indira Soni case. 30. यूसीसी लागू करने के मामले में गुजरात और असम की क्या स्थिति है? What is the status of Gujarat and Assam regarding UCC implementation? Answer. Gujarat, second state after Uttarakhand to implement UCC. Assam passed the bill but not fully implemented. 31. भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं और किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं?
In which part of the Indian Constitution are fundamental rights and in which part are directive principles? Answer: Fundamental Rights, Part 3, Articles 12 to 35, Directive Principles of State Policy, Part IV, Articles 36-51. 32. 42वां संविधान संशोधन किसके शासनकाल में आया और इसे मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? During whose rule did the 42nd constitutional amendment come and why is it called mini constitution? Answer: During Indira Gandhi's rule 1976 called mini constitution because it made the most comprehensive changes including adding fundamental duties, modifying preamble, and adding Article 131A. 33. 43वां संविधान संशोधन किसके शासनकाल में आया और इसने क्या बदलाव किया? During whose rule did the 43rd constitutional amendment come and what change did it make? Answer: During Morarji Desai's Janata Party government 1977 removed Article 131A restoring equal power to both Supreme Court and High Courts to review central laws. 34. सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत राष्ट्रपति किससे राय मांग सकते हैं? Under the advisory jurisdiction of the Supreme Court, on what matters can the President seek an opinion? Answer: On any question of law or fact of public importance under Article 143. However, the Supreme Court's opinion is not binding on the President. 35. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जीरो फर क्या है? What is zero fur in the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita? Answer: Under Section 183, a zero fur can be filed at any police station regardless of jurisdiction, which is then transferred to the appropriate police station. 36. वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी हैं या सलाहकारी? Are Finance Commission recommendations binding or advisory? Answer: Advisory, not legally binding as defined under Article 280. The government may or may not accept them. 37. राज्यसभा की विशेष शक्तियां exclusive powers कौन-कौन सी हैं? What are the exclusive powers of the Rajya Sabha? Answer: Under Article 312 create new All India services. Under Article 249 authorize Parliament to legislate on state list subjects in national interest. 38. गाडा पार्टी क्या थी और यह कहां से संचालित होती थी? What was the Ghadar party and from where did it operate? Answer: An Indian revolutionary organization that opposed British rule, operated primarily from San Francisco, USA, targeted by the Defense of India Act 1915. 39. भारतीय संविधान में मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के अंतर्गत कौन-कौन से तत्व आते हैं? Which elements are included under the basic structure doctrine of the Indian Constitution? Answer: Supremacy of Constitution, Republican and democratic form of government, secular character, separation of powers, federal character, unity and integrity of India, fundamental rights, judicial review, and free and fair elections. 40. अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्य परिषद के क्या कार्य हैं? What are the functions of the Interstate Council under Article 263? Answer: To inquire into and advise on disputes between states, investigate and discuss subjects of common interest to states and center, recommend better coordination of policy and action on such subjects. The 11th of August 2026 Current Affairs. 1. हाल ही में एयर मार्शल संदीप थरेजा को महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGAFMS के रूप में नियुक्त किया गया है. Air Marshal Sandeep Thareja was recently appointed as the Director General Armed Forces Medical Services DGAFMS. 2. अमेरिका की यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में आशीष यादव ने पुरुषों की भालाफेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है. Ashish Yadav won a silver medal in the men's javelin throw at the World Athletics Under 20 Championships 2026 held in Eugene, USA. 3. 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए में ओडिशा चैंपियन बना है. Odisha emerged as the champion in the 16th Hockey India Junior Men National Championship 2026 Division A.
4 अगस्त 2026 में होने वाले उच्च स्तरीय ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी के लिए मुंबई को चुना गया है। Mumbai was selected to host the high-level BRICS Friendship Cities Conclave 2026 scheduled for August 2026। 5 IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में AI आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया गया है। The AI-powered high-performance supercomputing facility, Param Pragya, was inaugurated at IIT Delhi's Sonipat campus। 6 2026 में मिस वर्ल्ड के 75वीं वर्षगांठ संस्करण की मेजबानी वियतनाम कर रहा है। वियतनाम is hosting the 75th anniversary edition of Miss World in 2026। 7 बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 की मेजबानी मंगोलिया ने की है। Mongolia hosted the multinational joint military exercise Conquest 2026। 8 एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD एक्सरसाइज 2026 भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। The Explosive Ordnance Disposal EOD exercise 2026 is being conducted between the navies of India and the USA। 9 अगस्त 2026 में पुदुचेरी पुलिस को उनकी बहादुरी और समर्पण के लिए प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है। Puducherry Police was awarded the President's Colors for its bravery and dedication in August 2026। 10 भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन भोपाल में किया गया है। The 11th BRICS Culture Ministers meeting was held in Bhopal under India's BRICS chairmanship। 11 विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया है। The central government launched Operation Trishul to bring back 274 fugitive criminals hiding abroad under assumed names and identities। 12 बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है। Australia hosted the multinational Air Force exercise Pitch Black 2026। 13 हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपी वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। सोने रूपी वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी, which was recently in the news, is located in Assam। 14 शोधकर्ताओं ने नई खोजी गई पौधों की प्रजाति बगोनिया नीलमोरम का नाम न्येशी जनजाति के नीलम कबीले के नाम पर रखा है। Researchers named the newly discovered plant species, Begonia nilomorum, after the Nilam clan of the Nyeshi tribe। 15 गुजरात के राठवा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को हाल ही में भौगोलिक संकेतक गीक टैग प्रदान किया गया है। The traditional Pithra painting of Gujarat's Rathwa tribal community has recently been granted a geographical indication geek tag। Previous question answer। The Har Ghar Tiranga 2026 campaign was launched by which ministry and during which dates is it being observed? Answer B. Ministry of Culture August 9-17। The Ministry of Culture launched the Har Ghar Tiranga 2026 campaign on August 6, 2026 in New Delhi। The campaign runs from August 9 to 17, 2026, with this edition marking 150 years of Vande Mataram via mass singing events। The Suryapat Tiranga Relay will connect Indian missions globally। Question of day. The Union Government introduced the Kerala Alteration of Name Bill 2026 in Lok Sabha on August 10, 2026। What is the proposed new name for Kerala? A. Keralam, B. Malabar Pradesh, C. Kerala Rajyam, D. Keralakam। Thank you। Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs and GKGS।